Now magnetic field along the axis of a circular current loop. So now this is again a circular loop, but now we have to find out, and current is flowing like this, and we have to find out at दिस इज सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने P ले लिया. सो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. दिस इज एट एक्सियल पॉइंट, okay, along the axis. So for this what we do, we take a current element first. So we consider here a current element, this one. This is a current element dl. Okay, now we draw from current element to this is position, this position R, और यहाँ पर हम इसको S ले लेते हैं, ये कॉमन डिस्टेंस हम R लेंगे, ठीक. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप. Now at this point, due to this current element, magnetic field will be perpendicular like this. This is dB. Okay. Now इस dB के हमें दो कंपोनेंट लेने हैं, एक कंपोनेंट like this and other component along the axis. Okay. Now this angle we will take phi. This angle phi. So this is 90 minus phi, and again this is also 90. So this one is phi. Okay. So this will be dB cos phi, and this side dB sin phi. Okay. Now due to every current element on this circumference, on this coil, there will be a magnetic field. There will be two component of magnetic field. One is dB cos phi and other is dB sin phi. dB sin phi for all component that will be along the axis, and dB cos phi cancel each other for diametrically opposite current element. Suppose if we take current element here also, this is also a current element dl. Okay. For this, if we draw again like this, then again dB इसकी वजह से इधर होगा. Okay. Then dB sin phi this side and dB cos phi this side. This angle will be phi. This is also phi. So dB cos phi cancel each other, and dB sin phi will add up and give the net magnetic field. Okay. So now let us drive the relation for this magnetic field at this point. So first, due to current element dl, due to current element dl, the magnetic field at point P at point P, dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा अपॉन, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है s, सो अपॉन s स्क्वायर. ओके. नाउ बिकॉज dl एंड s, dl और s एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सो dl परपेंडिकुलर टू s, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री. सो dB इक्वल टू अगेन वी गेट हेयर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर. ओके. थीटा हट जाएगा. नाउ एस स्क्वायर, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज dB
magnetic field at P has two components. dB sin phi and dB cos phi. Okay, dB cos phi cancel each other. Due to diametrically opposite current elements. Okay, so net magnetic field will be how much? Magnetic field will be total magnetic field or net magnetic field. Net magnetic field B equal to dB, ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं dB sin phi. Okay, so now dB we know that mu naught upon 4 pi I dl upon s square. So we write here mu naught upon 4 pi I dl upon s square into what is sin phi. So sin phi from here, sin phi equal to perpendicular upon hypotenuse यानी कि a upon s. So sin phi equal to a upon s, that means mu naught upon 4 pi, mu naught upon 4 pi I will come out upon s cube into a, and it will be dl. Okay, dl will be how much? 2 pi a. So mu naught upon 4 pi I a upon s cube, this is cube, into 2 pi a. Okay, so from this we get mu naught upon 2 I a square upon, now s क्यूब है ये, s की जगह हम क्या रख सकते हैं, s इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2. We can write like this. Okay, so mu naught I a square 2 a square plus r square 3/2. This is magnetic field at point P. Now in simpler form, if r is much greater than a in this diagram, यहाँ पर r जो है वो कॉयल की रेडियस से, अगर कॉयल की रेडियस से बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर है, मच ग्रेटर, देन क्या इग्नोर कर सकते हैं हम, a को इग्नोर कर सकते हैं. ठीक, देन मतलब हाँ a को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. देन इट विल बी 2 mu naught I a square upon 2 r cube.